अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा ख़ान है एंड आई एम अ सर्टिफाइड CBT थेरेपिस्ट। जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है विच हैज़ ऑल्सो बिकम अ नेशनल इमरजेंसी नाउ एंड एवरीवन इज़ प्रीटी scared and upset and tensed about it. One of the major reasons of this stress is that there's an uncertainty about the future. हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, एजुकेशन सिस्टम्स का क्या होगा, जॉब्स का क्या होगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन में कब आएंगी। इस अनसर्टेनिटी की वजह से हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और हर किसी में या ज़्यादातर लोगों में एनजाइटी डेवलप हो रही है. दिस इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन आवर वीडियो एंड हाउ टू कंट्रोल इट. सबसे पहली चीज़ जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं क्लियर करूँ बिकॉज दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज़ that there's a major symptom of coronavirus which is shortness of breath या सांस लेने में मसला होना या सांस रुकना, जो कि एनजाइटी का भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है. तो अगर आपकी सांस रुक रही है, do not panic, don't feel like you have coronavirus. Make sure that you see if you have other symptoms or not. If you do not have the other symptoms, that means you're okay, but you're anxious right now, which is also pretty normal to be anxious at this point because everyone is very, very stressed, right? And that's because of the emergency that has spread, and that's because of all the information that we're getting from the social media, from the news, or from other people. And we are all, obviously, when you're absorbing that much information also which is negative, it's okay to feel upset, it's okay to feel worried, it's okay to feel stressed, right? दूसरी चीज़ ये है कि दो तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं जिनको अगर अपडेट नहीं मिलती है इन्फॉर्मेशन की हर 10 मिनट बाद या हर आधा घंटे बाद, दे फील वेरी वेरी स्ट्रेस्ड और उनकी एनजाइटी इस चीज़ से ट्रिगर होती है बिकॉज दे वांट टू सी द इन्फॉर्मेशन और दे वांट टू रीड द इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ओन. तो ऐसे लोगों के लिए एडवाइजेबल है कि आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ें. आपको एक घंटे के बाद इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, 2 घंटे के बाद पढ़नी है, that's fine, but make sure that information is from a reliable source, preferably from a reliable website, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी रूमर्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैल रही हैं जिसकी वजह से आपकी एनजाइटी और ट्रिगर हो सकती है विदाउट एनी रीज़न. Secondly, the other kind of people are who do not really like direct exposure of information, and because of that their anxiety triggers. So what they can do is कि वो किसी रिलायबल इंसान से बात करें, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से, लेकिन मेक श्योर वो दोस्त या वो रिश्तेदार कोई नेगेटिव वाइब या कोई नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर डेवलप ना करे. तो इस तरह किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से इंफॉर्मेशन लेने से ये होगा कि आप डायरेक्ट एक्सपोजर से बचेंगे और आपकी एनजाइटी ट्रिगर नहीं होगी एंड यू विल फील अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड. Assalamu alaikum. मेरा नाम महनू नासिर है and I'm a certified CBT therapist, and I'll be talking about how to deal with the anxiety caused by COVID-19 or coronavirus. At the moment, anyone I meet, they talk about feeling helpless because they can't go out, they can't go to work, and as a result of it, they start feeling depressed, sad, or having low mood. And जब आप घर पे होते हैं और आप फील कर रहे होते हैं कि बहुत थोड़ा सा काम है और बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं है, तो आप बैठ के सोचते हैं. जब आप बहुत सोचते हैं तो वो ओवर थिंकिंग होती है, जिससे नेगेटिव थिंकिंग होती है, और फिर उसके बाद आपकी एंजाइटी और बढ़ती है. एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस ये एक साइकिल बन जाता है, सोच से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, एंड फिर आपको ये फीलिंग्स क्रिएट होती हैं हेल्पलेसनेस की. तो इस साइकिल को तोड़ने का एक तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप कर सकते हैं. आपको इस वक्त ये परेशानियाँ आ रही हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ करके इससे डील कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, योर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट यू आर एट होम एंड यू हैव नथिंग टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर प्रॉब्लम्स के काम पे चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं या की नहीं हैं, और या फिर काम करने को नहीं है, आगे क्या होगा, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हो गई. अब इनमें से आप एक ऐसी प्रॉब्लम चूज़ करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर फीलिंग हेल्पलेस, आउट ऑफ कंट्रोल. You want to be doing things that are in your control, that you can either fix or plan to fix, and then work in that direction so that you feel like you're doing something, you're productive, and you're useful even when you're in quarantine. For instance, one problem being what to do at home. What can you do at home? Create a solutions list, even in your mind if you can. You can exercise, you can
you can start exercising, you can start doing yoga, or you can take up any sport like badminton or cricket that you can play in the house. As a result of this, आपकी exercise physical रेगुलेशन, ब्लड रेगुलेशन करती है, जिससे इमोशनल रेगुलेशन होती है और इससे आपका मूड अच्छा होता है, आप एक्टिव फील करते हैं, आपका और चीज़ों में पार्ट लेने का दिल करता है. इसके साथ साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी इग्नोर और वी कांट डू बिकॉज वी आर टू बिजी इन आवर नॉर्मल रूटीन्स, लाइक सेल्फ केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, और इवन हैविंग न्यूट्रिशनल फूड. जितना आप वो कर सकते हैं, गूगल इट, गूगल होम रेमेडीज़, गूगल थिंग्स दैट you can do at home right now for your skin or your hair. When you start doing these things, that will make you feel like you're doing something better to your own health. That itself makes you feel good. Apart from that, इतनी चीज़ें होती हैं जो हमारी पेंडिंग पे भरी होती हैं. For instance, घर में कोई नई चीज़ इंस्टॉल करना, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना, कोई पेंटिंग क्रिएटिव पे जाएँ तो कोई पेंटिंग करना चाहता है, टाइम नहीं मिल रहा, नॉवल पढ़नी थी, टाइम नहीं मिला. Pick those things up. Pick those things that you had put off. Because when you start doing them, you will start feeling better, because all this while you were waiting to get some time to do these things and feel good. These are some things that bring you joy, and when you start indulging in them, you start feeling good. Your time also passes. Apart from that, this is one time where the men and the women both are in the house all the entire day. When you cook, start cooking together. As a result, you will have good interactions. You will be involved with each other. So the best way to not end up in a vicious thinking cycle is to interact with your immediate environment. Interact and indulge. Do things that bring you joy and you couldn't do because you didn't have time. Now that you have time. The thing is, ये आपको बहुत बेसिक बातें लगेंगी, लेकिन जब हम एंग्जाइटी में होते हैं या ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हमारे जहन में ये बातें नहीं आती. परेशान होते हैं, हमें किसी को हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम ये भी कर सकते हैं. So we're hoping that this way, that when you can control things or you work on things that you can control, you end up seeing the results of them. जब घर साफ होएगा, नई चीज़ सामने नजर आएगी तो खुशी होगी, आपको लगेगा कि आपने कोई काम किया है, एंड एज अ रिज़ल्ट आप अच्छा फील करेंगे. ऐसी चीज़ें करने से it can help reduce your anxiety, and this is basically our aim, to help you help yourself in this time of too much free time. So we hope that this video helps you, finds you in a good health, and if you have any questions or queries, please let us know in the comment section below. We'll respond to you as soon